प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रसारित कार्यक्रम मन की बात का सीधा प्रसारण। मन की बात के बाद हमारा निश्चित कार्यक्रम जारी रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। पिछले दिनों जिस बात ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया वह है चीता। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेजेस आए हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी हो या फिर तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात के राजन जी हो या फिर दिल्ली के सुब्रत जी। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई हैं। 130 करोड़ भारतवासी खुश हैं, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा? साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूँ। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूँ। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं, आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी, चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया। एक तरह से आजादी के बाद देश में जो हीन भावना थी, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करे। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन निर्मित किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे
कि देश की प्रगति का पैमाना अंतिम पायदान पर मौजूद व्यक्ति होता है। आजादी के अमृत काल में हम दीनदयाल जी को जितना जानेंगे, उनसे जितना सीखेंगे, देश को उतना ही आगे लेकर जाने की हम सबको प्रेरणा मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत माँ के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया है। और अब शहीद भगत सिंह के नाम से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम इस दिशा में एक और कदम है। मैं चाहूंगा अमृत महोत्सव में हम जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। वैसे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कहते हैं जीवन के संघर्षों से तपे हुए व्यक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाती। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कुछ ऐसे साथियों को भी देखते हैं जो किसी ना किसी शारीरिक चुनौती से मुकाबला कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो या तो सुन नहीं पाते या बोलकर अपनी बात नहीं रख पाते। ऐसे साथियों के लिए सबसे बड़ा संबल होती है साइन लैंग्वेज। लेकिन भारत में बरसों से एक बड़ी दिक्कत ये थी कि साइन लैंग्वेज के लिए कोई स्पष्ट हाव भाव तय नहीं थे, स्टैंडर्ड्स नहीं थे। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए ही वर्ष 2015 में इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना हुई थी। मुझे खुशी है कि ये संस्थान अब तक 10,000 वर्ड्स और एक्सप्रेशंस की डिक्शनरी तैयार कर चुका है। 2 दिन पहले यानी 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे पर कई स्कूली पाठ्यक्रमों को भी साइन लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। साइन लैंग्वेज के तय स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काफी बल दिया गया है। साइन लैंग्वेज की जो डिक्शनरी बनी है, उसके वीडियो बनाकर भी उनका निरंतर प्रसार किया जा रहा है। यूट्यूब पर कई लोगों ने, कई संस्थानों ने इंडियन साइन लैंग्वेज में अपने चैनल शुरू कर दिए हैं। यानी 7-8 साल पहले साइन लैंग्वेज को लेकर जो अभियान देश में प्रारंभ हुआ था, अब उसका लाभ लाखों मेरे दिव्यांग भाई बहनों को होने लगा है। हरियाणा के रहने वाली पूजा जी तो इंडियन साइन लैंग्वेज से बहुत खुश हैं। पहले वो अपने बेटे से ही संवाद नहीं कर पाती थी, लेकिन 2018 में साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेने के बाद माँ बेटे दोनों का जीवन आसान हो गया है। पूजा जी के बेटे ने भी साइन लैंग्वेज सीखी
और अपने स्कूल में उसने स्टोरी टेलिंग में प्राइज जीतकर भी दिखा दिया। इसी तरह टिंका जी की 6 साल की एक बिटिया है जो सुन नहीं पाती है। टिंका जी ने अपनी बेटी को साइन लैंग्वेज का कोर्स कराया था, लेकिन उन्हें खुद साइन लैंग्वेज नहीं आती थी। इस वजह से वो अपनी बच्ची से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। अब टिंका जी ने भी साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग ली है और दोनों माँ बेटी अब आपस में खूब बातें किया करती हैं। इन प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ केरला की मंजू जी को भी हुआ है। मंजू जी जन्म से ही सुन नहीं पाती है। इतना ही नहीं, उनके पेरेंट के जीवन में भी यही स्थिति रही है। ऐसे में साइन लैंग्वेज ही पूरे परिवार के लिए संवाद का जरिया बनी है। अब तो मंजू जी खुद ही साइन लैंग्वेज की टीचर बनने का भी फैसला ले लिया है। साथियों, मैं इसके बारे में मन की बात में इसलिए भी चर्चा कर रहा हूं ताकि इंडियन साइन लैंग्वेज को लेकर अवेयरनेस बढ़े। इससे हम अपने दिव्यांग साथियों की अधिक से अधिक मदद कर सकेंगे। भाइयों और बहनों, कुछ दिन पहले मुझे ब्रेल में लिखी हेमकोश की एक कॉपी भी मिली है। हेमकोश असमिया भाषा की सबसे पुरानी डिक्शनरीज में से एक है। यह 19वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। इसका संपादन प्रख्यात भाषाविद हेमचंद्र बरुआ जी ने किया था। हेमकोश का ब्रेल एडिशन करीब 10,000 पन्नों का है और यह 15 वॉल्यूम से भी अधिक में प्रकाशित होने जा रहा है। इसमें 1 लाख से भी अधिक शब्दों का अनुवाद होना है। मैं इस संवेदनशील प्रयास की बहुत सराहना करता हूँ। इस तरह के हर प्रयास दिव्यांग साथियों का कौशल और सामर्थ्य बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। आज भारत पैरा स्पोर्ट्स में भी सफलता के परचम लहरा रहा है। हम सभी कई टूर्नामेंट्स में इसके साक्षी रहे हैं। आज कई लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगों के बीच फिटनेस कल्चर को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने में जुटे हैं। इससे दिव्यांगों के आत्मविश्वास को बहुत बल मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं कुछ दिन पहले सूरत की एक बिटिया अन्वी से मिला। अन्वी और अन्वी के योग से मेरी वो मुलाकात इतनी यादगार रही है कि उसके बारे में मैं मन की बात के सभी श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। साथियों, अन्वी जन्म से ही डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और वो बचपन से ही हार्ट की गंभीर बीमारी से भी जूझती रही है। जब वो केवल 3 महीने की थी, तभी उसे ओपन हार्ट सर्जरी से भी गुजरना पड़ा। इन सब मुश्किलों के बावजूद न तो अन्वी ने और न ही उसके माता पिता ने कभी हार मानी। अन्वी के माता पिता ने डाउन सिंड्रोम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की और फिर तय किया कि अन्वी की दूसरों पर निर्भरता को कम कैसे करेंगे। उन्होंने अन्वी को पानी का ग्लास कैसे उठाना, जूते के फीते कैसे बांधना, कपड़ों के बटन कैसे लगाना, ऐसी छोटी 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 चीजें सिखाना शुरू किया। कौन सी चीज की जगह कहाँ है, कौन सी अच्छी आदतें होती हैं, ये सब कुछ बहुत धैर्य के साथ उन्होंने अन्वी को सिखाने की कोशिश की। बिटिया अन्वी ने जिस तरह सीखने की इच्छा शक्ति दिखाई, अपनी प्रतिभा दिखाई, उससे उसके माता पिता को भी बहुत हौसला मिला। उन्होंने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। मुसीबत इतनी गंभीर थी कि अन्वी अपने 2 पैर पर भी खड़ी नहीं हो पाती थी। ऐसी परिस्थिति में उनके माता पिताजी ने अन्वी को योग सीखने के लिए प्रेरित किया। पहली बार जब वो योग सिखाने वाली कोच के पास गई तो वे भी बड़ी दुविधा में थे कि क्या ये मासूम बच्ची योग कर पाएगी। लेकिन कोच को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि अन्वी किस मिट्टी की बनी है। वो अपनी माँ के साथ योग का अभ्यास करने लगी और अब तो वो योग में एक्सपर्ट हो चुकी है।
अन्वी आज देश भर के कंपटीशन में हिस्सा लेती है और मेडल जीतती है। योग ने अन्वी को नया जीवन दे दिया। अन्वी ने योग को आत्मसात कर जीवन को आत्मसात किया। अन्वी के माता-पिता ने मुझे बताया कि योग से अन्वी के जीवन में अद्भुत बदलाव देखने को मिला है। अब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का हो गया है। योग से अन्वी की फिजिकल हेल्थ में भी सुधार हुआ है और दवाओं की जरूरत भी कम होती चली जा रही है। मैं चाहूंगा कि देश विदेश में मौजूद मन की बात के श्रोता अन्वी को योग से हुए लाभ का वैज्ञानिक अध्ययन कर सके। मुझे लगता है कि अन्वी एक बढ़िया केस स्टडी है जो योग के सामर्थ्य को जांचना परखना चाहते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों ने आगे आकर के अन्वी की इस सफलता पर अध्ययन करके योग के सामर्थ्य से दुनिया को परिचित कराना चाहिए। ऐसी कोई भी रिसर्च दुनिया भर में डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की बहुत मदद कर सकती है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। विशेषकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जुड़ी मुश्किलों में योग से बहुत मदद मिलती है। योग की ऐसी ही शक्ति को देखते हुए 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना तय किया हुआ है। अब यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने भारत के एक और प्रयास को रिकॉग्नाइज किया है, उसे सम्मानित किया है। ये प्रयास है वर्ष 2017 में शुरू किया गया इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। इसके तहत ब्लड प्रेशर की मुश्किलों से जूझ रहे लाखों लोगों का इलाज सरकारी सेवा केंद्रों में किया जा रहा है। जिस तरह इस इनिशिएटिव ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वो अभूतपूर्व है। ये हम सब के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है कि जिन लोगों का उपचार हुआ है उनमें से करीब आधे का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। मैं इस इनिशिएटिव के लिए काम करने वाले उन सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से इसे सफल बनाया। साथियों, मानव जीवन की विकास यात्रा निरंतर पानी से जुड़ी हुई है, चाहे वो समंदर हो, नदी हो या तालाब। भारत का भी सौभाग्य है कि करीब 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी कोस्टलाइन के कारण हमारा समुद्र से नाता अटूट रहा है। यह तटीय सीमा कई राज्यों और द्वीपों से होकर गुजरती है। भारत के अलग-अलग समुदायों और विविधताओं से भरी संस्कृति को यहाँ फलते फूलते देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन तटीय इलाकों का खान-पान लोगों को खूब आकर्षित करता है। लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही एक दुखद पहलू भी है। हमारे ये तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीचीज पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। 5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीन अप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के दौरान लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। एनएसएस के लगभग 5,000 युवा साथियों ने तो 30 टन से अधिक प्लास्टिक एकत्र किया
ओडिशा में 3 दिन के अंदर 20,000 से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रण लिया कि वे अपने साथ ही परिवार और आसपास के लोगों को भी स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर के लिए प्रेरित करेंगे। मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इस अभियान में हिस्सा लिया। इलेक्टेड ऑफिशियल्स, खासकर शहरों के मेयर और गांवों के सरपंचों से जब मैं संवाद करता हूं तो ये आग्रह जरूर करता हूं कि स्वच्छता जैसे प्रयासों में लोकल कम्युनिटीज और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करें, इनोवेटिव तरीके अपनाएं। बेंगलुरु में एक टीम है यूथ फॉर परिवर्तन। पिछले 8 सालों से यह टीम स्वच्छता और दूसरी सामुदायिक गतिविधियों को लेकर काम कर रही है। उनका मोटो बिल्कुल क्लियर है, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट एक्टिंग। इस टीम ने अब तक शहर भर की 370 से ज्यादा जगहों का सौंदर्यीकरण किया है। हर स्थान पर यूथ फॉर परिवर्तन के अभियान ने 100 से 150 नागरिक को जोड़ा है। प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुबह शुरू होता है और दोपहर तक चलता है। इस कार्य में कचरा तो हटाया ही जाता है, दीवारों पर पेंटिंग और आर्टिस्टिक स्केचेस बनाने का काम भी होता है। कई जगहों पर तो आप प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्केचेस और उनके इंस्पिरेशनल कोट्स भी देख सकते हैं। बेंगलुरु के यूथ फॉर परिवर्तन के प्रयासों के बाद मैं आपको मेरठ के कबाड़ से जुगाड़ अभियान के बारे में भी बताना चाहता हूँ। यह अभियान पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ शहर के सौंदर्यीकरण से भी जुड़ा है। इस मुहिम की खास बात यह भी है कि इसमें लोहे का स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश में चारों ओर उत्सव की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहाँ से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका ये है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें। इस समय यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो सही मायने में आजादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इस प्रोडक्ट को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हमने देखा है
त्योहारों पर पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी दूसरों का हित करने के समान, दूसरों की सेवा करने, उपकार करने के समान कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। आपने भी देखा होगा कि लोग आके आकर किसी न किसी टीबी से पीड़ित मरीज को गोद ले रहे हैं, उसके पौष्टिक आहार का बीड़ा उठा रहे हैं। दरअसल ये टीबी मुक्त भारत अभियान का एक हिस्सा है, जिसका आधार जन भागीदारी है, कर्तव्य भावना है। सही पोषण से ही सही समय पर मिली दवाइयों से टीबी का इलाज संभव है। मुझे विश्वास है कि जन भागीदारी की इस शक्ति से वर्ष 2025 तक भारत जरूर टीबी से मुक्त हो जाएगा। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव से भी मुझे एक ऐसा उदाहरण जानने को मिला है जो मन को छू लेता है। यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में रहने वाली जीनू रावतिया जी ने लिखा है कि वहाँ चल रहे गांव दत्तक कार्यक्रम के तहत मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने 50 गांवों को गोद लिया है। इसमें जीनू जी का गांव भी शामिल है। मेडिकल के ये छात्र बीमारी से बचने के लिए गांव के लोगों को जागरूक करते हैं, बीमारी में मदद भी करते हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देते हैं। परोपकार की ये भावना गांव में रहने वालों के जीवन में नई खुशियां लेकर आई है। मैं इसके लिए मेडिकल कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, मन की बात में नए नए विषयों की चर्चा होती रहती है। कई बार इस कार्यक्रम के जरिए हमें कुछ पुराने विषयों की गहराई में भी उतरने का मौका मिलता है। पिछले महीने मन की बात में मैंने मोटे अनाज और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के तौर पर मनाने से जुड़ी चर्चा की थी। इस विषय को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। मुझे ऐसे ढेरों पत्र मिले हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिलेट्स को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बनाया हुआ है। कुछ लोगों ने मिलेट्स से बनने वाली पारंपरिक व्यंजनों के बारे में भी बताया है। ये एक बड़े बदलाव के संकेत है। लोगों के इस उत्साह को देखकर मुझे लगता है कि हमें मिलकर एक ई बुक तैयार करनी चाहिए, जिसमें लोग मिलेट से बनने वाले डिशेस और अपने अनुभवों को साझा कर सकें। इससे इंटरनेशनल मिलेट ईयर शुरू होने से पहले हमारे पास मिलेट्स को लेकर एक पब्लिक एनसाइक्लोपीडिया भी तैयार होगा और फिर इसे माय पोर्टल पर पब्लिश कर सकते हैं। साथियों, मन की बात में इस बार इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको नेशनल गेम्स के बारे में भी बताना चाहता हूं। 29 सितंबर से गुजरात में नेशनल गेम्स का आयोजन हो रहा है। ये बड़ा ही खास मौका है, क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले
हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन स्विमिंग पूल के आसपास ना जाने दें। मैं दोहराता हूं, आप सभी से आग्रह है कि अपने बच्चों को स्विमिंग पूल के आसपास ना जाने दें। Drinks and eatables are not permitted inside the sports center. कृपया ध्यान दें, सभा भवन के अंदर किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री ले जाना वर्जित है। Once you take your seat, you shall not be permitted to leave until and unless the show is not over. Please enter only if you are ready to stay till the end of the show. सभी अतिथियों से अनुरोध है कि यदि आप एक बार सभा भवन में प्रवेश ले ले तो कार्यक्रम समाप्त होने तक बाहर ना जाएं। भवन में बैठने का विचार तभी बनाएं यदि आप पूरा कार्यक्रम देखने के इच्छुक हों। You are requested to switch off your mobile phones as it interferes with the PA system. कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखें ताकि पीए सिस्टम में विघ्न ना पड़े। All guests and parents are requested to park their cars appropriately in the parking area. आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपनी गाड़ियों को सही जगह पर पार्क करें। Parents are advised to refrain from making any attempts to meet their children during the function. सभी अभिभावकों तथा अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों से मिलने का प्रयास ना करें। Please cooperate with us to make this program a success. कृपया कार्यक्रम की सफलता में हमारा सहयोग करें। Tea is being served on the top floor of this building. You all are requested to help yourself to the refreshments before the show begins. सभी के लिए जलपान की व्यवस्था भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर की गई है। आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम आरंभ होने तक जलपान का आनंद उठाएं। The alumni is requested to stay back for the group photograph after the program is over. I repeat, the alumni is requested to stay back for the group photograph after the program is over. सभी पूर्व छात्रों अर्थात एलुमनाई से अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम की समाप्ति पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्रतीक्षा करें। मैं दोहराता हूं, सभी पूर्व छात्रों अर्थात एलुमनाई से अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम की समाप्ति पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्रतीक्षा करें। Ladies and gentlemen, for your own safety and security, it is important for us to make you all aware of certain points regarding the fire safety drill of the sports center, as your safety and security is of prime concern to us. आदरणीय अतिथिगण, आप सबकी सुरक्षा के लिए इस सभा भवन की अग्नि सुरक्षा ड्रिल के बारे में हम आप सबको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत करवाना चाहेंगे, क्योंकि आप सबकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। Pinegrove Sports Center is well designed and equipped to meet any emergency situations. यह खेल केंद्र किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की क्षमता रखता है। Fire safety equipments including water hose pipes have been installed on each level of this building. इस खेल केंद्र में प्रत्येक तल पर अग्निशमन यंत्र व पानी की नलियां स्थापित की गई हैं। The most probable way a fire may break out is mainly through an electrical short circuit. आग लगने का एकमात्र कारण बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट होना हो सकता है। In case of emergency, for your own safety and well-being, please don't panic and keep your calm and composure. आपातकालीन परिस्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए कृपया शांति बनाए रखें और भयभीत न हों। There are many exits on each floor of this building. इस खेल केंद्र में प्रत्येक तल पर अनेक निकासी द्वार बनाए गए हैं। There are two main doors right in front of the seating area on the ground floor. There is one exit at the back also. इस भवन में आपके बैठने के स्थान के ठीक सामने दो द्वार तथा पीछे की तरफ भी एक द्वार बनाया गया है। As you can see, all exits are connected with staircases to exit the building. सभी द्वार सीढ़ियों से जुड़े हुए हैं। Each exit is clearly marked with an exit sign in green on top of the gate. प्रत्येक द्वार पर हरे रंग से एग्जिट लिखा हुआ है। Our emergency crew is stationed next to each exit to aid you. हर निकासी द्वार पर आपकी सहायता के लिए आपातकालीन दस्ता तैनात किया गया है। Please note your closest exit. कृपया अपना नजदीकी द्वार देख लें। Please avoid pushing and jostling in case of emergency to evacuate the building. आपातकालीन स्थिति में धक्का मुक्की करने से बचें। So please sit back and enjoy the show. कृपया आराम से बैठिए और समारोह का आनंद लीजिए। Thank you. धन्यवाद।
The alumni is requested to stay back for the group photograph after the program is over. I repeat, the alumni is requested to stay back for the group photograph after the program is over. The photograph will be in the yoga hall. behind the scene MC, behind the scenes वाली वीडियो का MC कौन है? कोई MC नहीं, बस चला दो आप। बोल दो अभी चीफ गेस्ट में आने में टाइम नहीं, क्या बोला बोलो। Till the time the chief guest arrives, we have a small video for all of you. Please sit back and enjoy the video.
आप सभी के लिए प्रस्तुत है पाइनग्रोव स्कूल मूवी। आइए हम सब इसका आनंद उठाएं।
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु दीपज्योति परं ज्योति दीपज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमस्तुते वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पते दधातु शान्तिः Girls move. Girls go. Bottom, take the bottom.
वाहन संख्या 8384 वैगनार के मालिक से अनुरोध है कि कृपया अपने वाहन को उचित स्थान पर पार्क करें। मैं दोहराता हूं, वाहन संख्या 8384 वैगनार के मालिक से अनुरोध है कि कृपया अपने वाहन को उचित स्थान पर पार्क करें। धन्यवाद। In addition to the accepted philosophies of child-centric wholesome personality development and value-based education, Pinegrove believes in happiness being the vital core of a great institution. Pinegrove is a word in its own and has changed me inside out ever since I joined it back in 2012. It has not only given me the best of memories, but also the confidence to make for myself a bright future. पाइनग्रोव एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही मैं समझ गया था कि अगर मुझे उन्नति करनी है तो इसकी राह मुझे पाइनग्रोव ही दिखाएगा। The school's mission is to aspire to inspire, as we believe in the creation of exalted lives produced by the creative miracle of sincerity and hard work. And the motto of the school, "By toil to stars," is inscribed on a red ribbon in the school crest, signifying the pursuit for excellence through zealous perseverance. From a handful of students in a small, nondescript campus to a colossal sublime masterpiece of architectural marvel, Pinegrove's journey is one to be extremely proud of. At Pinegrove, hopes, dreams, and aspirations are turned into a reality, ensuring that each child who walks through the portals of this stupendous institution is armed with a transformational, life-changing learning experience. इस विद्यालय में आने का फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। इस विद्यालय ने मुझे एक सफल इंसान बनने की शक्ति दी है। Nature in its purest form, with hills, trees, and rivers, has a redeeming influence on man. Nestled in a grove of pines, in the foothills of the great Himalayas in the state of Himachal Pradesh, India, Pinegrove is situated in an exotic environment, providing the most ideal location for an idyllic institution. Pinegrove School is a co-education English medium residential school affiliated to the Central Board of Secondary Education and admits pupils without distinction of caste, creed, race, color, or religion. Pinegrove has a multicultural blend of pupils from all over India and overseas as well. The school's forte lies in being a member of the prestigious Indian Public Schools Conference and the internationally acclaimed Round Square International. The school is ascribed to the NCC and the International Awards for Young People, along with being ISO certified. High-tech computer facilities and interactive classrooms ensure cutting-edge expertise to deliver appropriate components and cultivate technological skills integral to modern-day pedagogy. The school campus is Wi-Fi enabled and computer-aided classes are routinely conducted. पाइनग्रोव मेरी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2012 में मैं अपने विद्यालय का एक भाग बनी थी। तब से लेकर अब तक मैंने अपने विद्यालय को तरक्की की ओर अग्रसर होते देखा है। यहाँ पर हर विद्यार्थी को आत्मविश्वास, साहस और कर्मठता के रास्ते पर चलना सिखाया जाता है। Pinegrove is exceptionally proud of its lush green playfields, which have acquired their own saga of dauntless displays. Sports imbibe incredible qualities of team spirit, sportsmanship, perseverance, impartiality, and fairness. The school also possesses facilities for swimming, shooting, basketball, gymnastics, band, squash, badminton, pool, table tennis, chess, and carom, which keep the children productively occupied. Magnanimity in victory and modesty in defeat are taught in ample quantity on the playing fields of the school. Physical training provides alertness, agility, endurance,
and flexibility. And parade aims to instill in them a pride in their uniform and inculcates obedience. Now the parade is marching on tune, Sare Jahan Se Acha. Numerous leadership qualities are developed through the traditional house system. A nourishing competitive spirit is advanced through inter-house matches and competitions which are conducted regularly between the four houses: Chinar, Deodar, Oak and Teak. Pinegrove is a cradle of leadership, producing managers and organizers of tomorrow who can shoulder the responsibilities entrusted to them and lead their men with dignity, honesty, fortitude, and valor. Children get ample opportunity to develop dexterity and aesthetic skills through various hobby sessions in gymnastics, karate, dance, drama, music, art and craft, cooking, and needlework as well. Besides hobbies, children join clubs such as the library, science. I seek the kind cooperation of the owner vehicle number 8384. I repeat, vehicle number 8384, which is a Wagoner, to hand over the keys to the parking authority. I repeat, I seek the kind cooperation of the owner of vehicle number 8384. I repeat, vehicle number 8384, which is a Wagoner, to hand over the keys to the parking authority. Good morning, everyone. I extend my warm welcome to our chief guest, Mr. Jai Ram Thakur, Honorable Chief Minister, Himachal. Guest of honor, Dr. Rajiv Saizal, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Ayurveda, Government of Himachal, and all the other dignitaries present today. It is a defining moment in the school's annals. The new sports center marks a new milestone in Pinegrove's perennial efforts in order to provide the best possible recreational and sports facilities to the students. Realizing that a healthy mind and healthy body go together,
The new sports center will not only promote a higher level of physical culture amongst the students, but will also take our excellence in sports to another level with the help of state-of-the-art equipment. Shri Jai Ram Thakur, Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, assumed office as the head of state government on 27th December 2017. He is the first Chief Minister of Himachal from Mandi district and is the incumbent 14th Chief Minister of the state. He completed his graduation from Government Degree College, Mandi, and his post-graduation from Punjab University, Chandigarh. He won his first election under the flagship of the All India Student Organisation, ABVP, and has remained Joint Secretary, State ABVP, and Organising Secretary, ABVP, Jammu and Kashmir. He has also served as State Secretary and President of the Bharatiya Janata Yuva Morcha as well. His immense popularity is reflected by the fact that he has been continuously re-elected to the Himachal Pradesh Legislative Assembly for over 5 terms since 1998. He is a senior state Bharatiya Janata Party leader. He was chairman of the Rural Planning Committee and has been vice chair and member of various other house committees of the state government before being inducted into the Council of Ministers as a cabinet minister for Panchayati Raj and Rural Development in 2009. Born on 6 January 1965, Shri Jai Ram Thakur is from a simple background and is married to ABVP colleague Dr. Sadhna Thakur from Jaipur, who, apart from being a professional doctor in medicine, has green fingers and is an agriculturist and horticulturist as well. They have 2 daughters, both of whom have chosen to pursue medicine like their mother. Shri Jai Ram Thakur has a special interest in organizing blood donation camps and social service. His favorite pastimes include listening to old music, performing one-act plays, and going on excursions. He is extremely humble, modest, God-fearing, hard-working, and hence a very popular leader. Our Honorable Chief Minister is a noble, decent, and pious soul and has a very soft corner in his heart for Pinegrove School. We're deeply honored and privileged to have him here amongst us today. Dr. Rajiv Saizal is the Honorable Minister for Health, Family Welfare and Ayurveda, Government of Himachal. He is a member of the Himachal Pradesh Legislative Assembly from Kasauli constituency, District Solan. A bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery, Dr. Saizal is fluent in English, Hindi, Punjabi and Pahari languages. During his illustrious political career, he has served as the General Secretary for Dr. Sel in Solan District's BJP. He then became the party's district president and was first elected in the State Legislative Assembly in the year 2007. Owing to his popularity, he was re-elected thrice. खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूं। अगले महीने मन की बात में नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के Good morning, everyone. I request everyone to come and be seated in the hall. The chief guest can be here any moment. नमस्कार। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया सभा भवन में आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारे मुख्य अतिथि किसी भी समय यहाँ पधार सकते हैं। Kindly minimize the noise and movement inside the sports center. Your cooperation will be highly appreciated. सभी अतिथियों से विनम्र अनुरोध है कि खेल केंद्र में कृपया अपनी आवाज धीमी रखें ताकि कार्यक्रम में विघ्न ना पड़े। हम आपके सहयोग की सदैव कामना करते हैं। Children are not allowed to go for a round of the sports center without their parents, especially around the swimming pool area. I repeat, children are not allowed to go for a round of the sports center without their parents, especially around the swimming pool area. Continuously from Kasauli constituency.
He then became a member of the General Development and Rural Planning Committees and also became a part of the Cabinet of Ministers in December 2017. Dr. Saijal was born on 11th July 1971 and is married to Dr. Renu Saijal. Apart from being a successful medical practitioner, he is a voracious reader of philosophy and motivational literature. He loves yoga, listens to classical instrumental music, and likes to visit new places. Of a very decent and amiable nature, he makes new friends easily and is an epitome of humbleness and courteousness. No wonder he has been acclaimed as the Adarsh Yuva Vidhayak. We are deeply honored and privileged to have him amongst us here today. हिंदू धर्म में मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व माना गया है। इनके बिना हमारी पूजा का न तो अंत होता है न आरंभ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। शिव जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं तथा सहारक भी हैं, इनका न कोई आदि है न अंत। वे जटाधारी त्रिनेत्रधारी हैं तथा उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है। गले में सर्प माला पहने वे हाथों में डमरू तथा त्रिशूल धारण करते हैं। उन्हीं भगवान शंकर की स्तुति में लीन होते हुए आइए हम सभी उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे इस नवनिर्माण को सफल बनाएं तथा सदैव हम पर अपनी कृपा व दया बरसाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे सदा वसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबितं भुजंग तुंगमालि डमड्डमड्डमड्डमल्लिनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोत नः शिवं। जटा संभ्रमं रमणीलिंप निर्जरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्धरी। जगत 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 जल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक्षणा।
बम 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 तिरिकिट तक शंग 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 तिरिकिट तकता ओम टिमिक डम डमरू बाजे गिरी कैलाश शिखर पर नाचे डिमिक डिमिक डम मृदंग बाजे शीश गंगर दंग विराजे कुमार हमारी सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू निधंग शिव शम 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 शनन किट जम 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 किट जम 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 किट जम 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 शिव शम 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 शनन किट जम 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 किट जम 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 किट जम 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 शिव शम 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 शनन किट जम 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 किट जम 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 किट जम 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 Pinegrove has soared from a run-of-the-mill campus to a colossal masterpiece. The absolute grandeur of the school setting and awe-inspiring surroundings never fail to inspire the admiration of every visitor. We're extremely proud of our upward journey and feel thrilled to share it with our well-wishers. We hereby present to you the documentary about the history of Pinegrove and its journey uphill.
glorious soaring alumni mast awakens treasured memories of our past. Standing tall, witness to the progress vast, envisioning a future forever to last. The school has risen from a small, nondescript campus to a colossal, sublime masterpiece of architectural marvel. The journey indeed is something that we are extremely proud of. The sheer magnificence of the school's setting and awe-inspiring surroundings never fail to inspire the admiration of every visitor. As the years have rolled over, our growth in terms of new admissions, coupled with retention of old students and increase in the manpower, has been exponential. Supported by a well-qualified and experienced team spread over 2 campuses with a multicultural diaspora from 11 countries and 17 states, representing diversity in cultural practices, which empowers them with a broader vision and true secular values. From its humble beginning, the campus has grown rapidly from blackboard to smart classes and prides itself of classrooms with cutting-edge technology, high-tech computer labs and Wi-Fi enabled campuses. In a short span of time, Pinegrove's growth in terms of quality and general acceptance in the education circles of the country was noteworthy. Our results have always been stupendous, and apart from academics, we shone as an institution in other fields as well. Infrastructure, adventure, sports, visual and performing arts, internationalism, discipline and happiness have been our forte and are core to Pinegrove's curriculum. Pinegrove turfs too have tales of their own unforgettable victories. Irrespective to its share of jubilant and poignant moments, our cricket stadium and pavilion stands tall and bears mute but potent testimony to the making of Pinegrove into a legend. स्कूल का परिसर जो पहले 2.5 एकड़ जमीन पर था, अब उसका विस्तार बढ़कर 25 एकड़ हो गया है और दोनों विद्यालयों की सुंदरता देखते ही बनती है। हमारा विद्यालय हमेशा से विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने में प्रयासरत है। इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम तथा मिसाल है विद्यालय में स्थित सभागार द कॉलोजियम का निर्माण। This acoustically treated facility is in a league of its own, with a total seating capacity of 750, with surround sound, drop-down screens, long-throw projectors, intelligent lighting, and air conditioning. पाइनग्रोव के विद्यार्थी देश विदेश में अपने कार्यों से विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें से कई प्रशासनिक सेवा अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सेना अधिकारी, नेता, अभिनेता, निर्देशक व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें सफलता प्राप्त करते देख हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। We endeavor to provide our students with every avenue to excel in sporting activities alongside their educational quest. This very consciousness was the stimulus behind developing a state-of-the-art sports center. With this center, we shall try to provide impetus to not only athletic achievements, but also to embrace fitness
as a part of lifestyle of children. While striving to maintain a harmony between the physical and mental well-being of our students, sport is accorded a high priority as it plays a vital catalyst in their development. इस सपने को अमली जामा पहनाने की भी अपनी चुनौतियां थी। पहाड़ी इलाका, अप्रत्याशित मौसम की स्थिति, कोविड-19 का खतरा और मिश्रित जटिलताएं। साल दर साल होती देरी ने हमें हताश भी किया, तब भी अपने सपनों की कशिश कम ना होने पाई। अगणित हाथों की जी तोड़ मेहनत और अनाम चेहरों के द्वारा किया गया प्रयास आखिर अंजाम तक पहुंच ही गया। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। Our indoor sports center, which is yet another milestone, has the following facilities: 2 basketball courts, 3 squash courts, a table tennis hall with 8 tables, 11-lane shooting range, fitness center, a yoga hall, an indoor heated swimming pool, 3 badminton courts and a billiards table. 6 वर्षों के अथक प्रयासों से यह मरीचिका आज विंग कमांडर SS ज्ञानी स्मारक खेलकूद केंद्र के रूप में परिणत हुई है। The fair winds of nature and God's blessed fortunes have humbly overwhelmed the school. They have scattered its goodness in the winds, dispersed its reputation in the air, and endorsed its glory in the sands of time. परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जय हिंद। I now request our Executive Director, Captain AJ Singh, to address the eminent gathering. Good afternoon, everybody. Good afternoon, everybody. It's an immense pleasure for me to be standing here, welcoming this august gathering. We are most humbled, grateful for the Honorable Chief Minister Shri Jai Ram Thakur to have come despite all his engagements, despite the weather, despite all the hurdles. He has come to be here with us. The Honorable Health Minister Dr. Saizal, extremely grateful for your presence, sir. We welcome MLA Doon constituency, Paramjit ji. He is here. He's also joined us. There are lots of my friends. Dr. Renu ji has also come along. I'm missing Sadhana ji here. I wish she had been
present amongst us. I'm so grateful that Mr. Baldi has taken time to come. There are many officers of the state government here. Welcome you all. There are many principals from different schools here. We welcome all of you. There are other local people from the area. Some of our beloved parents, my friends who've come from far off, my family who has come from far. There are so many well-wishers who are watching us live and who are present here. The staff, students, and the workers who worked so hard to build this masterpiece. We thank you all for joining in our happiness. Today is an emotional day. It's emotional because it sends us back to when we started, so that we do not forget the humble beginning. Today, if somebody watches Pinegrove, comes, sees the facilities, says, wow. But that journey, I just want to go through that a little bit because it brings us into that nostalgic period. I remember the journey when 1991, when it started, just 6 rooms, 18 children. And we had a tough time completing that year. We didn't have finances. The staff just waited for their salaries. It took 6 months to pay salaries. They just continued to be with us. Maybe they just saw our intent. We used to just pray कि काश भगवान 100 बच्चे कर देना, स्कूल चला देना. It was a tough time. I was living in a cement store. I used to tie my pug every night so that cement doesn't get into the pagdi. I used to tie my pagdi out on the main road, that Kasauli Road on top. Puni karta tha along with the branch of a tree. There was no toilet. 6 months we lived like that. When we started Sabatu, I remember we didn't have a dining hall. We started it. The kids were eating under a walnut tree for months together. Camping style. We went to the bank for a loan of 3 lakhs. We were not given it. Said, you do not have credibility. My widowed sister sold her gold to make us just run. But we had dreams. Those dreams were keeping us alive. But then today when I look at it, I say destiny is all. Destiny is everything which enables us to dream and make it a reality. Had destiny not been on our side, we may not have reached. ना कुछ किया ना कर सके ना कुछ पै शरीरा जो कुछ किया सो हर किया. That's what Kabir said. It's all God's will. Today, after a few years, I won't be here standing to talk to my Pinegrove faculty, I'm sure. But the school will live on and it will be an asset for the state of Himachal and the country for years and years and years to come.
We had dreams of making a play field. This is what it looked like, the school, on the day we opened. I remember we started making this little play field. And some friends said, कि अभी कितने बच्चे हो गए? मैं से 36 हो गए. से प्ले फील्ड बना रहे हो, डॉर्मेटरी बनाओ यार, बच्चे और करो, प्ले फील्ड क्यों बना रहे? ऐसे मेरे वो 36 बच्चे कहाँ खेलेंगे? 50 दूर की बात है, पहले मेरे 36 खेले. At that time we didn't have a play field to play, so I went to the then headmaster of the Lawrence School, Sanar. He's sitting here. I'm so proud of him. Dr. Sumer Singh is sitting here with us today. In 91, he was headmaster, Sanar. And I went to him, I said, sir, my children need a playground to play. He said, use Newfield in the mornings during PT time, we don't use it. He was so gracious. My children, we used to walk up. I remember this. We used to walk up every day to the field at 5 o'clock. We used to play. And sometimes we would watch the Sanarians walking down. And then we would pack up bags and then sit on the side and watch them. You can imagine the feeling. And come back for breakfast at 8. In 1992, after first year, we had this one playfield in which we little boys started playing, and then we had our first inter-school match. I remember we went to BCS to play soccer. And we were losing by 11 goals when it was 11-0. When I heard Kabir Mustafi calling the coach and saying, "Ki inko ek goal to karne do." And then the team fell back and we scored one goal and we were very happy about it, and we lost the match 11-1. But there has been no looking back. Today, we have 4 full-fledged fields, the Sun Stadium, the Sabatu field, and we are building a 5th field under development at Sabatu. Every 200 children, every 200 to 220 children are going to have a play field. I remember the annual function we used to do, the tents. I know many alumni is here, so I'm just reminding you of those days. This is where we were, and this is where we are now. This is the quality of performing art which we are able to produce today. These are just few visuals. I remember the then Chief Minister, Mr. Dhumel, had come to inaugurate this. And he had come for 20 minutes. And when he came inside, he said, helicopter वापस भेज दो, हम रोड से जाएंगे, हम पहले यहाँ पूरा फंक्शन देखेंगे. 2.5 घंटे बैठे रहे. Even after the public had gone, he just wanted to hear the story of Pinegrove. 2.5 hours he spent with us. That made us feel proud. The then CM was also there. There were many dignitaries there. But all this could not have happened, sir, without your support, without the support of all friends, parents, especially parents, who have at that time, many of you are here. I remember when we did not have money, I used to send a letter out for donations. And there used to be somebody giving 500 rupees, somebody 1100 rupees. I remember one parent, he's no longer here, but his son is here today. He was one of our first students. They trusted us at the time when the school was nothing. He comes into my office and he says, Captain साहब को चिट्ठी लिखी थी. I said, हाँ जी लिखी थी. बाद तो बाद किन्ने देते? मैं क्या जी आप पेरेंट ने इन्होंने वो भी पेरेंट थे. I don't want to take names, but that
I remember those parents who, he says, 11,000 dete. He says, mere ek ki likh deo. Then the fees was only 15,000. He gave 21,000 as donation to make that school run. That was the kind of support we got. That is the kind of love we got. That is the kind of faith we received. Through all our problems, we've had good friends. Good friends in the government, good friends in the political circle, good friends who have trusted us and taken us this far. Today I thank each and every one of you, those parents. It's because of you that Pinegrove exists today. Pinegrove has not taken any money on loan. Pinegrove has built every infrastructure from your money, from your parents' money. This is your school, it's public property. It's for the future of India. So this, my first message is a gratitude to all our parents, family, friends, staff members, those people who have served us. Since the day when we were not giving salaries for 6 months, those teachers are also staying with, they are still serving in the school today. Our sincerity of our intentions was recognized by you all, alumni who are sitting here, parents who are sitting here. Thank you very much. Dreams, they don't always come true. I had visited this school, Brighton Grammar School, in 2014 in Australia. Fantastic school. And I saw this wellness center there. And I felt that Pinegrove should have a thing like this. I've not seen a complex like this in any school in India. Got these ideas, I brought them here. I said, let's build one. In 2014, the seed of the dream took place. Those officers are here who helped us get the permissions, and then the foundation stone was laid by the then Chief Minister, Veerbhadra Singh, in 2016, in 2 years of planning. And then the challenges from the architecture to the permissions, execution, COVID hurdles, finance management. And you'll be happy to know we have the budget, we've saved 4 crores on the budget in the construction of this complex. That's thanks to the finance team. We thank the various people who have worked tirelessly to make this project come true. We thank the government of Himachal, we thank the well-wishers, and we thank God. But every great institution is not about infrastructure. Ladies and gentlemen, you can build the best infrastructure and still not be a great school. We many times feel schools are being ranked. What is your ranking? What is that? Though we've had fantastic rankings, I know this year the rankings are even better than last year. We've risen up to the top 3-4 rankings in this country, but in co-ed boarding schools. But honestly, I know that rankings are not totally objective, they are subjective. So I want to tell you that even though we are a very highly ranked school, we want to tell you our quality, because many of you know Pinegrove but don't know the real quality. May have heard of Pinegrove, but not the real quality.
We have very high quality academics. Since our establishment in our class average, we have topped Himachal each and every year. We have touched in academics the top 100 schools in the country, 26,000 CBSE schools thrice, 15th, 33rd and 66th. This is competing with all the day schools, with all the schools which have tuitions and huge amount of parental help. Here in a co-ed environment, we have been able to produce such fantastic results. Without tuition, without parental help. Look at the statistics. Statistics speak. Any great school should be able to say, we are great in this, we are great in this, we are great in this. If you are a top school, you should be top in the parameters which measure how good you are as a school. This is one parameter. 85% of our children, they rise. My children are listening. They know what I'm talking. 10% remain same, only 5% go down. This is our statistics. From 38 children in 12th class, we are now 100 children in 12th class. So we are 200 in 11th and 12th alone as a boarding. Look at the progress in numbers. Look at the progress in statistics of figures. We are now continuously in the 90s in class average. That means more than 50% of these children are above 90. The quality of faculty, that means, is fantastic, and that's through a great selection, training, happiness, and retention. The importance of sport, nobody can doubt it. We are here for that. We've all gathered here for that. But you have to understand, formal sport, not even 1% of India plays it. Not even 0.5% of India knows how to swim. These are statistics, you can Google them. This is the kind of quality which this facility is being given to what? 800 children, 900 children. For these 900 children, we have 22 sports coaches. 55%, this is statistics, ladies and gentlemen. 55% of our students participate in inter-school activities. And we have a result of 66% victories in the last 5 years. Statistics can't lie. Greatness speaks through this. We are hosting 5 inter-school tournaments every year. We are participating in 30 to 32 tournaments every year. All around the country. Ladies and gentlemen, the victories are numerous. I don't want to enumerate them. But in every age group now, from that 11-1 loss, in every age group, under 12, under 14, under 16 and under 19, we have won tournaments in practically every sport, both in boys and girls. The list of sports will come up in front of you which we play. So the wide variety, the wide age groups and the wide variety of children participating. Now what is our aim with this complex? We aim that a child should specialize in 1 or 2 sport, and we aim to raise that 55% to 75% of participation of children in inter-school events. So 3 out of 4 children will get part. And these are the sports which are available in the school. Now it's co-scholastic as well.
22 sport coaches supported by 19 activity instructors. So you have got in our 2 campuses 41 people dedicated to the development of children apart from academics. Ladies and gentlemen, every sculpture you see here is made in the school. Look at them. This crest on top is made by our art department in fiberglass. Every painting you see in the complex is made by our students and teachers. School is strong in adventure. Yesterday they've gone to Everest Base Camp. They've climbed Kilimanjaro. They've cycled to Khardungla. They've done a lot of peaks. They've rafted for 100 kilometers together. They've driven from here to Kanyakumari and back in road trips. They've done a lot in adventure. And approximately 10 to 12% of students take part in international travel each year. Internationalism is very strong. Right now also, we have 20 odd children in UK. A lot of importance is accorded to public speaking and dual language proficiency. Because I have realized this, that my children need to be proficient in both Hindi and English. That is the requirement of the day, and that's what we are focusing on. So if you see my children, they would be announcing in Hindi and English. Our school song is in Hindi and English. Our debates are bilingual. The quality of food, healthcare, inclusiveness. Now we have all the 3 kinds of counseling. It's special education, guidance and counseling with psychology, as well as career counseling. All the 3 are being focused at. We maintain a bully-free, smoke-free, drink-free, substance abuse-free, a mobile-free and a cash-free school. And we maintain it with a very high order of discipline, without enforcement, without any kind of corporal or other punishment. We are strong in social service. We've started scholarships. 2 government children from government schools we pick up every year, give them total 100% scholarship in Pinegrove. We pick up 5 to 6 children from Shrestha scheme of Government of India. We've got the Government of Sikkim which sends us Government of India scholarship students. So we have a total of about 50 students on scholarship in the school. And we sponsor them. The government scholarship children, one of them has been sponsored to the Everest Base Camp. One of them has been sponsored by the school for an exchange program to Canada. So they are getting opportunities as good as any other child. We focus on safety and security. We got great affiliations for exposure and opportunities for children. We are working on skill development. This is our next aim in development. We are registered for the IB Carriers program. We are registered for the Atal Tinkering Lab. We will be focusing on skill development in children. Our USP is pastoral care, discipline, value education, and happiness. This is our USP. This is our unique selling point, and we are very strong at it. It's the only reputed school with small children, class 1 onwards. Yes, there is a feeling that why should we take such small children? I look at my own life. I lost my mother when I was 2. My father was in the Indian Air Force. He was working. Now, either he sent us to a hostel or left us in the care of ayahs. He had no choice.
I was grateful that he sent me to the launch schools now. So we look after small children, and we are very good at that. So happiness for all is our aim. Staff, students, support staff, parents, all alike. Now, as stakeholders, we are very proactive in pedagogical innovations. Now, when we say we are a great school, what are we doing? What's the greatness? We're doing a lot of pedagogical innovations. We are working hard at discipline. From P to C, we moved from those days of punishment, power, privilege. We have moved into compassion, care, collaboration, cooperation. Now our children are self-disciplined. Today I had one principal telling me, your dining hall is fantastic. A lot of, the discipline was great. No enforcement. We are proud of our discipline. We are proud of our children. Thank you, children. We have a benchmarking system. We have a benchmarking system in the school. Every child is given a benchmark dependent on the average 3 years performance, last 3 years performance. He's given a benchmark to perform. He doesn't have to be a 90%er to get an award, a platinum star or a gold star. He can easily get an improvement star. He can get a star as good as any other star if he just manages to keep his benchmark. And so that he's competing with himself and not anybody else. This is total innovation, patented Pinegrove School. Every child is benchmarked in every subject for total percentage and every subject individually. So he can get an achievement star. We've shifted to a 5-day week. The first boarding school maybe, I've not heard of any other, to shift to a teaching of only 5 days. We're working on NAP implementation on the 5th day. Every child in Pinegrove is getting to do PT, games, activities, and current affairs every day. PDLP, public speaking, Seva, GST, that's knowledge development, general studies, national pride, environment care, they're doing every Saturday. We are a zero waste organization. You'll be proud to know that not a single truck or vehicle of waste has gone into the municipality or the panchayat waste bin for the last 5 years. Not a single truck. Pinegrove has managed its own waste in both campuses. There's democracy in functioning. Staff selection is done by staff itself, by management later. Prefect selection done by staff and students. Diamond star selection, this is another innovation of Pinegrove. This is a star for a disciplined child. He may not be great at studies. He may not be great at games. The goodness is evaluated by staff and students. And he can get a diamond star. These are innovations to encourage children. So it's not just a purely academic-oriented institution. Appraisals. There are 5 appraisals every year. Student to staff, staffs to students. There is benefit. This is another new thing we have started, is the management is very approachable. The beneficiary stakeholder can give his query, suggestion, concern, goes to an opening of a ticket, then it is monitored, there is a management response, there is information to the beneficiary, and then the ticket closing takes place. And this is totally computerized for the parents and for our beneficiaries to ensure that every query, every suggestion, every concern is attended to. Beneficiary satisfaction. Now, we have anonymous appraisals. Anonymous appraisals by students of staff, by an external agency of staff. Anonymous staff-to-staff appraisal.
There is staff appraisal by the head of department, and the best part is there's an anonymous parent feedback on school's performance every year. This is rare. You should be proud of it. And then we are even more proud that 97%, this is statistics again, 97% astoundingly are happy and satisfied with our performance. And out of this 90s, even when you take, even by Singapore international standards, any service industry gets 85%, it's rocking. We are at 97% of satisfied parent. And out of this, ladies and gentlemen, 75% are highly satisfied. That is very, very proud. And these statistics are for the last 3 years. So it's not just world-class infrastructure, ladies and gentlemen. We do a lot in all the 23 parameters which we have listed in school education. There is hardly anything in which we are not doing well. We are trying to address every issue in making the school a great institution. And this gives us a sense of completeness, a sense of self-actualization, a sense of great satisfaction that we've done a wonderful job. And this is just information to you all. And there's a message for you parents. All this infrastructure parents you are seeing today, I just wish that your grandchildren bask in the glory of Pinegrove School one day. So big thank you from Pinegrove to everybody present here. There's a message from the Honorable Minister Anurag Thakur and a message from Mr. J.P. Nadda, the National President BJP. I'd just like them to play this before we go on with the program. Thank you very much, and thank you once again for attending this. Thank you. Namaskar. As a true well-wisher of the Pinegrove School and lover of sports, I am very pleased to know that a world-class sports center has been built following the style and construction of the most modern sporting facilities in the world. I am very pleased to know that this complex is of 77,000 square feet and consists of 3 squash courts, 3 badminton courts, an indoor basketball court, gymnastic hall, and many sports which could be played like TT to billiards to yoga and a climbing wall. That clearly shows what kind of facilities are we going to get. Not only this is also going to have a 450-seater dining hall and kitchen facility, accommodating a 5-star sports kind of facilities along with the facilities for the coaches. And I'm sure that this complex is going to be one of its kind facility for any school to construct. Well done, Captain A.J. Singh and team. And I'm sure, as I seen in the past when I inaugurated the cricket stadium at Pinegrove School, that has been put to use by not only by the Pinegrove School students, but also by Himachal Pradesh Cricket Association, and you've been hosting the women's tournament, and we could see the sea change also in the women cricket team when they're playing at the international level. If you look at the Olympics, Paralympics and the Deaf Olympics, look at the previous record and this year's record. We have seen after Prime Minister Modi taking over as Prime Minister, he started with the program called Target Olympic Podium Scheme to look after take care of the boarding, lodging, training facilities of the players. Everything has been taken care, nationally to the international level coaching and even participation at the international level. All the expenses are borne by the Government of India. Apart than that, 6 lakh rupees out of pocket allowance to those Target Olympic Podium Scheme players. Not only this, close to 3,000 players have been selected, identified, and they have been sent to various SAI accredited academies so that they can get the training. And not only this, their boarding, lodging, training facilities are also taken care by
the Government of India, and they are given 1,20,000 rupees additional as out-of-pocket allowance. And if you could see the result, the highest ever medal, 7 in Olympics, and Neeraj Chopra winning the gold medal, and our wait for 121 years to win a gold medal or a medal in athletics has been fulfilled by none other than Neeraj Chopra. Look at the Paralympics. Last time we had only 19 players in the contingent. This time we won 19 medals. Deaf Olympics we won 16 medals. Thomas Cup in last 73 years we never won a gold medal. This time India won the gold medal in Thomas Cup. IPA Women World Boxing Championship, Nika Zareen won the gold medal and others won many medals. Apart than that, look at the Commonwealth Games record. 20 gold medals and 61 overall medals. One of the finest performances in the last so many years. And I'm sure when schools like Pinegrove are going to create such facilities, others should also look at these kind of facilities. So many such residential schools or the day boarding schools should come out with best of the best facilities, and also university should pitch in to create sports infrastructure. If you look at the US model, their universities plays a very, very important role in winning the medals. Their players, hundreds of them, they are winning medals Olympic after Olympic. That clearly showcase the contribution of the education system, universities and colleges. My humble request to Captain AJ Singh is, please put this facility to the best of the use. Because when these young kids, when they play, stay fit, stay healthy, only then they can connect with the country's potential. Only then they will become a master of value addition to the power of the country. Only then they will contribute toward the nation building. And I'm sure that all the stars like them will shine in your respective fields and make the dreams of New India come true. Once again, congratulations and thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar and good morning to all the esteemed guests present here on this auspicious day of Navratra to inaugurate and celebrate this magnificent sports center. Chief Minister Shri Jai Ram Thakur ji, Dr. Rajiv Saizal ji, Captain AJ Singh ji, Ms. Samiksha and other distinguished guests, members of the staff and dear students. I really wish I could be there in person, but I am delighted to be a part of this achievement through this video message and would like to congratulate everyone present here, especially Captain AJ Singh and his team who have done such a phenomenal job. Dear friends, we must realize that this is not just a state-of-the-art sports facility, but a dream come to life and dream Captain AJ saw, pursued and accomplished. This is a testament of his character, the school's motto, as well as what it inculcates in its students. What makes this architectural marvel so special is the journey behind it and the affiliation of so many people with it. I myself am very proud to be associated with this institute as a parent. I have seen this growth this institute has made in such a short span of time in terms of quality of education, co-curricular activities, opportunities, infrastructure, and the kind of character building it has done is just exceptional. The contribution Pinegrove and Captain AJ are making in shaping the future responsible citizens of the country is commendable. For him to leave the defense services and dedicate his life
towards creating a modern day Gurukul speaks volumes about his zeal and passion for quality education. I very vividly remember meeting a Captain AJ for the very first time way back in 1997-98 when I was the health minister, and both of us were there to see the then chief minister. While we waited in the lounge, it got us talking, and Captain AJ started to tell me about Pinegrove and his vision and aspirations for the school. He showed me an album about the kind of activities they do and amidst all this, I could feel his excitement, his passion, his curiosity about what the school can do and achieve in the near future. This left with me an impression of a man who will never look back, a man who will sail through storms with a smile, a man who will give his best no matter what he does, and I'm just glad to see the same Hedy proving his mettle day in and day out. Our paths did not cross for a couple of years. After that, in 2004, when we decided to send our children to a boarding, the first school that came to my mind was Pinegrove, solely based on the brief interaction with AJ. Believe you me, Malika and I did not even think of comparing it with any other school or weigh our options. Such was an impression Captain AJ had left on us. Every year from then on until our children completed their schooling, I've been a part of their journey as a very proud parent, and still I am. Not only did I see the school grow and set high standards for themselves, but also the growth of my children and their friends. They turned out to become strong, independent, confident, disciplined, moral and ethical, and most importantly, good human beings. Such are the values of this institute, which helps them nurture and mold its students into becoming responsible citizens of the country. All this is only possible when there are principals like Captain AJ who lead by example and work with their students with the heart of a mother and discipline of a father, and also reflects in all the staff members as well. It would be unfair on my part not to mention Miss Samiksha, the undeterred, ever-smiling pillar of support and strength of Pinegrove and Captain AJ. She has played a very pivotal role in shaping Pinegrove and its products with her iron and steel determination to inculcate ethics and high morals with motherly affection. I would also like to pay homage and remember Mr. Singha, a teacher who has touched lives of students in a manner that all the ones I know feel extremely lucky and honored to be his pupils and hold him in the highest regard. My deepest condolences to the family and all the loved ones. May God give them strength and solace to the departed soul. In the end, I would like to congratulate the school and its management for creating a sports arena of international standards, and hope it will produce future medalists and world champions. Sports play a very important role in overall personality development, and I hope the students make the most of it. I would also love to visit the school sometime soon and see this facility and meet Captain AJ, who reminds me of a quote by Albert Einstein, that only those who attempt the absurd achieve the impossible. Thank you all and congratulations once again.
I now request Guest of Honor, Dr. Rajiv Saizal, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Ayurveda, Government of Himachal, to address the gathering. आज के इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रदेश के बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मानीय ठाकुर जयराम जी, माननीय विधायक 2 निर्वाचन क्षेत्र श्री परमजीत सिंह पम्मी जी, इस स्कूल के सम्मानीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अजय सिंह जी, बहुत सम्मान के योग्य श्रीमती समीक्षा जी, सम्मानीय उप सचिव श्री राजेश्वर गोयल जी, सम्मानीय श्री वाल्दी जी, सम्मानीय जिलाधीश कृतिका कुलहरी जी, सम्मानीय एसपी वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री कपूर सिंह वर्मा जी के साथ उपस्थित सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्तागण, प्रेस के बंधु, पेरेंट्स, उपस्थित सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र और छात्राएं, आज हम पाइनग्रोव स्कूल की निरंतर होती उन्नति के साक्षी बन रहे हैं और इस कार्यक्रम की गरिमा और भी बढ़ जाती है जब प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री हम सब के साथ यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मैं सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व जब कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी, मुझे आने का मौका मिला और ये परिसर जो है आज जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं दिखाई दे रहा था। तकरीबन 12-13 दिन पहले की बात है। तो मुझे लग रहा था कि कार्यक्रम तो बहुत नज़दीक आ गया है, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने समय भी दे दिया है, क्या तब तक इतने कम समय में ये परिसर तैयार हो जाएगा। मैं बधाई देता हूं कैप्टन अजय सिंह जी को, सम्मानीय श्रीमती समीक्षा जी को और इनकी जो समर्पित टीम है जो उनके नेतृत्व में काम कर रही है। आप सबके लगन और परिश्रम के कारण से, आप सबकी कमिटमेंट के कारण से इतने कम समय में इतने भव्य परिसर का निर्माण जो है वो हुआ है। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ आकर के विश्वास होता है कि पाइनग्रोव स्कूल भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक स्कूल है। बच्चों का कोई भी पक्ष, शारीरिक पक्ष, शैक्षणिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आप निरंतर आप प्रयास करते हैं और मुझे विश्वास है कि बीतते दिनों के साथ हर आज का दिन पाइनग्रोव स्कूल के लिए कल के दिन से बेहतर होता है। जब भी मैं कैप्टन साहब के साथ बैठता हूँ तो मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो उनको सुनता हूँ। शिक्षा पर उनके विचार, किस प्रकार से अच्छे स्कूल बन सकते हैं, किस प्रकार से गुणवत्ता युक्त शिक्षा स्कूलों में दी जा सकती है। और जब भी मैं उनके साथ बैठता हूँ तो इस आशय के साथ बैठता हूँ कि मैं भी कुछ विचार ले सकूं और मन में एक सपना होता है कि हमारे सरकारी स्कूल भी एक दिन ऐसे ही हों जैसा पाइनग्रोव। मुझे लगता है हमें ऐसे स्कूलों से सीखने के लिए बहुत कुछ है और जब भी नीति परिवर्तन हो, हम गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात जब हिमाचल प्रदेश में करते हैं, वैसे तो सम्मानीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की दृष्टि से हमने बहुत बेहतर किया है, लेकिन हम और बेहतर कर सकते हैं जब अपनी शिक्षा नीति में कैप्टन अजय सिंह जैसे व्यक्ति के साथ बैठ करके हम उनसे जो तत्व आपने जो कुछ यहाँ पर किया है उसमें से कुछ एक चीज़ों का समावेश हम सरकारी नीति में कर सकें। मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स परिसर का आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है
और मुझे जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे लगता है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं निश्चित तौर से बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला है। मैं यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका जो प्रेजेंटेशन था हेडमास्टर साहब, वाकई इट वाज एन आई ओपनर। और आपकी यात्रा आपने जब ज़ीरो से शुरू किया और आज जहाँ पर आप पहुँचे हैं, मुझे लगता है ईश्वर ने भी आपके ऊपर पूरी कृपा की है। लेकिन जिस दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं आप, वो निश्चित तौर से मुझे लगता है उसकी सराहना होनी चाहिए। आप सबको इस कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। नृत्य मेरी अभिलाषा, नृत्य मेरा सम्मान है और नृत्य मेरी पहचान। भारत विविधताओं का देश है जहां कला कई रूपों में विद्यमान है। भारत में प्राचीन काल से कई कलाएं विकसित हुई हैं, जिनमें से एक नृत्य भी है। भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों में से कथक एक प्रमुख नृत्य है। इसी नृत्य को हमारे नर्तक आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस प्रस्तुति में हम आपके समक्ष कथक नृत्य की विभिन्न लयकारियां व गीत प्रस्तुत करेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कथक नृत्य।
देव।
This sports center, a dream project of our school, has taken shape with the unconditional and unwavering support of many people. We feel privileged to honor those who have been instrumental in making this day possible. I would like to request our worthy Chief Guest, Mr. Jai Ram Thakur, Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, to come upon the stage and felicitate those who have worked day in and day out to make this marvelous sports center. I would also like to request our Honorable Minister, Dr. Rajiv Saizal, and our Executive Director to accompany the Chief Guest to the stage. I now invite Mr. Vasu Bhasin to come up on the stage and receive a token of our love and gratitude. Now I request Mr. Suresh Sharma to come up on stage and accept a token of our love and regard. I now invite Mr. Sanjay Puri. Now I request Mr. Hemant Jindal to come up on stage and accept a token of our love and regard.
I now invite Mr. Pradeep Mamgen to come up on the stage and receive a token of our love and gratitude. Now I request Mr. Kuldeep Rana to come up on stage and accept a token of our love and regard. I now invite Mr. Jagparvesh Bindal to come up on stage and receive a token of our love and gratitude. Now I request Mr. Sanjay Kumar to come up on stage and accept a token of our love and regard. I now invite Mr. D.K. Sharma to come up on the stage and receive a token of our love and gratitude. अब मैं हमारे प्रेम व आभार स्वरूप भेंट स्वीकार करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री बलबीर सिंह को। अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री माजिद अली। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री शमसुद्दीन को।
अब मंच पर आमंत्रित हैं श्री लीला दत्त। श्री लीला दत्त के बाद मंच पर आमंत्रित हैं श्री सुरेश दत्त। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री विनोद को। I now invite Mr. Jagparvesh Bindal to come up on the stage and receive a token of our love and regard. I now request our worthy chief guest to address the gathering. आज इस बहुत ही सुंदर स्पोर्ट्स सेंटर के इस इनॉग्रेशन के अवसर पर हमारे बीच में यहाँ के हमारे स्थानीय विधायक और हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी, हमारे बीच में जिन्होंने अपना जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, मैं कह सकता हूं कि इस ड्रीम को, इस स्वप्न को साकार करने में लगाया, ऐसे हमारे कैप्टन एजे सिंह जी, माननीय विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी, पूर्व विधायिका विनोद चंदेल जी, हमारे बीच में डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी जी भी हैं जो चेयरमैन रेरा के हैं, डिप्टी कमिश्नर सोलन, एसपी सोलन, हमारे साथ में हैं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी राजेश्वर गोयल जी भी हैं, और इस स्कूल के सभी आदर के योग्य सभी अध्यापक वृंद और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आज के इस शुभ अवसर पर कैप्टन एजे सिंह को और इनकी सारी टीम को, समीक्षा जी को, जिनका नाम मेरा संबोधन में छूट गया, मैं क्षमा चाहूँगा, इनके पाइन ग्रोव की सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में
इस प्रकार का स्पोर्ट्स सेंटर बनाना सही मायने में इस बात की सचमुच में हम भी कल्पना नहीं करते थे। एक ऐतिहासिक काम आपने किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं कैप्टन एजे सिंह की बात को सुन रहा था, जिस प्रकार से वो कह रहे थे, बोल रहे थे। इनकी स्पीच बहुत नॉस्टैल्जिक, जिसको कह सकते हैं, पुरानी यादें, एक एक परत खुल गई आपकी पुरानी याद की, और जिसका जिक्र आपने यहाँ पर बड़ा इमोशनल, भावुक तरीके से किया। सपने को साकार करना, सपने देखना एक विषय है, लेकिन उन्हें साकार करना और अपने परिश्रम के माध्यम से करना, ये सही मायने में एक बहुत बड़ा उदाहरण कैप्टन एजे सिंह से हम सीख सकते हैं, जो उन्होंने अपनी बात कही यहाँ पर। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश में, पहाड़ी के साथ छोटा प्रदेश, जहाँ बड़ी चीज़ों के बारे में ना लोग सोचते हैं, ना बड़ी चीज़ों के बारे में कल्पना करते हैं, और करने की तो बहुत ही कम करते हैं, वहाँ इस प्रकार की चीज़ों को सोचना, उनको करने के लिए जुट जाना, और एक डेडिकेशन के साथ कि ये करना ही है, करके ही छोड़ना है, सही मायने में ये कॉम्प्लेक्स जो है, मुझे लगता है कि उस दृष्टि से एक बड़ा उदाहरण है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का है, बच्चों के लिए भी है और हम सब लोगों के लिए भी है। काम कितना भी कठिन हो, जटिल हो, लेकिन उसके बावजूद जब लक्ष्य व्यक्ति निर्धारित कर लेता तो उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ये कुल मिलाकर के इस सारी चीज़ को देख करके हम कह सकते हैं। मैं इस कैंपस में पहली बार 2011 में आया था, 2011 में, जब हमारे परिवार में बच्चों के साथ बात करते करते ऐसा चर्चा करते कि भाई बच्चों को बोर्डिंग में भी डालना चाहिए तो अच्छा रहेगा, तो हमारी बेटी ने कहा कि अगर हो सके तो मुझे डाल दीजिए, बड़ी बेटी ने। तो हम फ़ोन किए कैप्टन साहब को, तो उन्होंने समय निर्धारित किया कि आ जाइए आप, बच्चे को भी साथ ले आइए। लेकिन इन्होंने बात पहले ही स्पष्ट कर दी, मैं उस वक्त मंत्री था हिमाचल प्रदेश सरकार में, कि बच्चे को एडमिशन लेने से पहले हम उनका टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, टेस्ट लेना भी चाहिए। और शायद इन्होंने इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर दिया कि कहीं ऐसा, कहीं नेता के दिमाग में ऐसी बात तो नहीं कि बिना टेस्ट के ही एडमिशन कर लें। हमने कहा कि टेस्ट तो लेना चाहिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे का मन था कि भाई, क्योंकि हम नेताओं के बारे में धारणा यही होती है कि जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में कोई हम किसी के एडमिशन के लिए बात कहते हैं तो ये लगता है कि ये एडमिशन के बारे में सिफारिश है। तो स्वाभाविक रूप से एक ऐसी क्या होता है कि एक तरह का एक बना होता ही है। तो मुझे इस बात को लेकर के खुशी है कि हमने वो डेट तय की, और उस दिन मैं बहुत बच्चों के स्कूल में बहुत कम गया हूँ अपने जीवन में, बहुत कम जाना हुआ, लेकिन उस दिन मैं भी आया। और बाई चांस क्या हुआ कि बेटी, मैं सुना रहा था, बेटी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का अटैक हुआ, तो पहले सोचने लगे कि जाएं ना जाएं, लेकिन आखिरकार हमने कहा समय लिया है, तो बेटी ने कहा कि चलते हैं। यहाँ पहुँचे और यहाँ सारा कैंपस भी देखा, इनके ऑफिस में बैठे, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट के लिए आप डेट तय कर लें। तो हमने बेटी से पूछा कि टेस्ट के लिए अगली तारीख हम कब की लें, तो बेटी ने कहा आज ही कर लीजिए,
हमने कहा तबीयत बहुत खराब है लेकिन उसके बावजूद भी आप कर लेंगे? उसने कहा मैं कर लूँगी, देख लेंगे। तो पूरे 2 घंटे के लगभग टेस्ट लिया पूरा, हमने इंतज़ार किया और उसके बाद हम यहाँ से वापस शिमला की तरफ गए। चाय पिलाई इनने और बेटी को खाने के लिए ब्रेड दिया और कुछ वो और बिस्किट्स वगैरह दे करके हम यहाँ से रवाना हुए। लेकिन शिमला पहुँचते उससे पहले हम रास्ते में बात कर रहे थे। हमने कहा कैंपस अच्छा है, सारा अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है और यहाँ इस स्कूल के बारे में हमने सुना था क्योंकि हमारे कुलीग्स के बहुत सारे बच्चे, नड्डा जी के बच्चे यहाँ पढ़ते थे और भी हमारे कुलीग्स के बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। अच्छा सुना था लेकिन पहली बार देखने का मौका मिला। लेकिन शिमला पहुँचने से पहले फ़ोन आ गया कि ये बच्चा मुझे चाहिए और मुझे इस बात की खुशी हुई कि हमारी बेटी ने अच्छा काम किया था और आपने उस सारी चीज़ें, एडमिशन की तारीख कर दी, एडमिशन हुई। तब से एक रिश्ता हमारा बना है और इस रिश्ते को हमने मजबूती के साथ संजो के रखा है और जब भी इनके साथ बैठ करके बात करने का अवसर प्राप्त होता है तो ये कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन जिस प्रकार से इंस्पायर करते हैं बच्चों को भी करते हैं, बच्चों के साथ साथ में पेरेंट्स को भी करते हैं और ख़ास तौर से अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में जिस तरह से आप जो है आपका प्रेजेंटेशन बहुत इफ़ेक्टिव है, प्रभावी है, जो भी आप बात कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो प्रेजेंटेशन प्रभावी होने के साथ साथ काम प्रभावी होना, ये कई बार मुश्किल होता है। काम भी प्रभावी है, इस बात के लिए मैं बधाई देता हूँ। जितना आप कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में, चाहे यहाँ का है चाहे वो हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स है सबाथू का, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स। हालांकि जब बेटी के एडमिशन के लिए जब मैं पहली बार उनको लेकर के उस दिन भी मैं आया तो जब हम सबाथू के उसमें पहुंचे तो वहाँ देखने के लिए गए। जब हम उतराई में जाने लगे नीचे तो सोचने लगे हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मोड़ एक काटा तो कुछ नहीं दिखा आगे, तो वही दिख रहा था पहाड़ से हम नीचे जा रहे हैं और बिल्कुल स्टीप डाउन जा रहे हैं और नीचे तो नाला ही दिख रहा था। तो ऐसे में लग रहा था कहाँ होगा स्कूल। फिर एक मोड़ 2 मोड़ काटने के बाद फिर जाकर के नीचे दिखा, तो नीचे पहुँचे तो सही मायने में हमने देखा इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। उसके बाद हमारा कई बार वहाँ पर आना हुआ, जाना हुआ। लेकिन सबसे अच्छी बात कि संस्थान खड़ा करना वो तो साधन के माध्यम से भी किया जा सकता है, लेकिन संस्थान के साथ एक कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ जुड़ना, दिल से जुड़ना, ये सबका नहीं हो पाता है जो कैप्टन एजे सिंह जी का है। हर एक चीज के साथ किस तरह का लगे, बच्चों के साथ अपना इनका लगाव, बच्चों के पेरेंट के साथ, और एक एक चीज को लेकर के अपने जो भी काम करना। सबसे बड़ी बात है कि काम जो करना और पूरा तसल्ली से करना, वो इस सारे इंस्टीट्यूशन में, इस कॉम्प्लेक्स में ऊपर से नीचे तक हमने जब घूमा तो देखने को मिला कि तबीयत से बनाई चीज है। जो भी चीज यहाँ पर, जितना भी हम देखने को यहाँ पर आज यहाँ पर उपलब्ध है, तबीयत से बनाई है। ये सबसे बड़ी बात है, एक डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ। और आज की तारीख में ये स्थिति इस कारण से मैं कह सकता हूँ कि जो आपने यहाँ पर पैदा की है, ये हिमाचल प्रदेश में तो क्या, मुझे लगता है कि देश में बहुत कम संस्थान होंगे, बहुत कम संस्थान होंगे, मुझे मालूम नहीं, मैं बहुत जगह सब गए भी नहीं, लेकिन जो सुविधाएं आपने यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और हिमाचल जैसे प्रदेश में ये पहली बार हुआ जहाँ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने जो है स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पर डेडिकेट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं इस बात को देख रहा था, 3
क्रैश कोर्ट्स हैं जो इसी कॉम्प्लेक्स में आपने बनाए, 3 बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, इंडोर बास्केट कोर्ट भी है इसमें, और जिम्नास्टिक हॉल भी इसमें है, और इंडोर हीटेड 25 मीटर्स स्विमिंग पूल है जो हमने देखा, बहुत सुंदर बना है वो। और उसके अलावा एक मल्टी जिम है, और उसके बाद 11 लेन शूटिंग रेंज भी इसमें है, जिसमें हमने भी अभी थोड़ा, मैंने और डॉक्टर सैजल जी ने, हमने दोनों ने मुकाबला किया है और हम दोनों बराबरी पर रहे हैं। और इसके साथ साथ में एक हॉल जिसमें 10 टेबल टेनिस के जो हमारे लगे हैं, बिलियर्ड्स का है, बिलियर्ड्स रूम इसमें है, योगा हॉल इसमें है, क्लाइंबिंग वॉल है। यानी कि मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई चीज़ लगभग जो मेन इवेंट्स होते हैं उसमें से कोई चीज़ छोड़ी नहीं। हर चीज़ को आपने, बास्केटबॉल को कोर्ट तो यही है जो, और उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सचमुच में एक बहुत वक्त लग गया, जैसा उन्होंने कहा कि कोविड एक ऐसा दौर था बीच में जिसमें सभी जगह काम प्रभावित हुआ, और यहाँ पर भी कामकाज में इसमें कठिनाई आई, और इसलिए स्पैन इस पर ज़्यादा लगा कि 6 साल लगे उसको पूरा करने के लिए। लेकिन साथ में उन्होंने इस बात को भी कहा कि हमने इतनी किफ़ायत से भी काम किया कि प्रोजेक्ट सही मायने में 22 करोड़ का था, और 22 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हमने कंप्लीट 18 करोड़ में किया। तो 18 करोड़ में मतलब 4 करोड़ रुपए की सेविंग भी इसमें की। तो ये भी एक बहुत हमारे सबके लिए जो है एक अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छा काम भी किया, और उस क्वालिटी वर्क होने के साथ साथ में और उसमें सेविंग भी की, वेस्टेज नहीं होने दी, ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक स्कूल के इतिहास के बारे में यहाँ पर जो हम देख रहे थे, यहाँ पर प्रेजेंटेशन, और यहाँ सामने उधर प्रदर्शनी में भी कुछ चीज़ें हमने देखी, प्रेजेंटेशन में भी हमने वो चीज़ें देखी, जब आप अपनी बात कह रहे थे तब देखते। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बहुत इस तरह की एक सफल यात्रा जो कई लोगों को प्रेरणा देती, और जैसे इसके इतिहास के संदर्भ में मुझे ये कहना है कि ये आने वाले समय में इसका बनाना चाहिए। आपने बनाया तो है उसको, और बेहतर ढंग से इसको और भी ज़्यादा ये बच्चों के लिए भी प्रेरणा के लिए है, पेरेंट्स के लिए भी प्रेरणा के लिए है। पाइन ग्रोव तब और अब, जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में 75 ईयर्स का हमारा हिमाचल प्रदेश का इतिहास हुआ है जब से हिमाचल बना है, तो हमने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग डिपार्टमेंट का इस प्रकार से किया है, हिमाचल तब और हिमाचल अब। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक तरफ देखने को सामने बिना एक्सप्लेन किए हुए वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। और इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पाइन ग्रोव तब और पाइन ग्रोव अब, इस तरह का एक बहुत सुंदर आपने जो चित्रण किया है, सही मायने में उससे कई लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिले। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा फोकस है, और आज की शिक्षा, जैसे हम बोलते थे पहले, एक दौर था कि साक्षर होना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया 15 अप्रैल 1948 को, उस वक्त हमारी हिमाचल की जो लिटरेसी रेट थी वो 4.8 थी, 4.8 थी। और आज हमारी साक्षरता, उस वक्त महिलाओं की साक्षरता दर तो 2% थी, 100 में से 2 महिलाएं पढ़ी होती थी। और आज हमारी साक्षरता दर केरल के मुकाबले की है, केरल से पीछे नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन एक दौर होता है जब साक्षरता का महत्व था कि पढ़ना आना चाहिए, नाम लिखना आना चाहिए, दस्तखत करने आने चाहिए। लेकिन आज तो कंपटीशन का माहौल है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस कंपटीशन के इस दौर में हमको उसी तरह से ही आगे बढ़ना, उसके बिना संभव नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं।
और ऐसी परिस्थिति में ये इंस्टीट्यूशन हमको एक बहुत बड़ी एक जो है वो एक प्रेरणा उस तरह से देता है कि आज के इस युग में जहाँ कंपटीशन हर जगह है, उसमें हमको अपने आप को कैसे सरवाइव करना है, कैसे हमको खड़ा होना है, किस प्रकार से। मैं एक एक चीज को देख रहा था, यहाँ बच्चों का परफॉर्मेंस हम देख रहे थे। पहला भजन था और क्या कितना जबरदस्त उसमें बेहतर ढंग से उनने परफॉर्म किया, क्या ताल के साथ उनने उस प्रकार से सारी चीज को एक रिदम के साथ जोड़ करके छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्म किया। और हम सब के लिए सचमुच में प्रेरणा, और खासतौर से हम नेताओं के लिए तो बहुत ज़्यादा, हमारा ताल कभी मिलता नहीं, तो इसलिए बच्चों से सीखना चाहिए। उन बच्चों ने किस प्रकार से एक रिदम में गा करके सब लोगों को कहा कि भी इस पर मतलब एक संदेश दिया है, मिल करके ये भी कर सकते हैं। और उसके बाद बच्चों ने जो, बेटियों ने जो परफॉर्म किया वो तो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती थी, वो भी कथक में, वो भी डांस में वो भी पार्टिसिपेट करती थी और उनका एक पैशन था और आज भी वो पैशन कायम है उनका। अब तो खैर वो पढ़ाई करने के बाद अगली कुछ पढ़ाई की तैयारी कर रही हैं, लेकिन अभी भी उनको काफ़ी उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें उनने यहीं सीखी है, इसी इंस्टीट्यूशन में सीखी। तो बच्चों को हर क्षेत्र में उनको डेवलप करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट का स्कोप जहां जैसे एक छत के नीचे मिल जाए, तो वो इंस्टीट्यूशन जो है निश्चित रूप से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताता है। और उसमें अगर मैं कहूँ, अगर हिमाचल प्रदेश में कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह की अगर प्रेरणा देने वाला है जहां बच्चों को एक छत के नीचे उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट का जो भी उसमें स्कोप है, उस स्कोप को, उस टैलेंट को एक्सपोजर देने के लिए जिसने सबसे बेहतरीन काम किया है, तो मैं कह सकता हूँ कि पाइन ग्रोव के यहाँ के टीचर्स ने और यहाँ के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर काम किया है, उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। हर इवेंट में हम देखते हैं, हर वक्त हम देखते हैं, कोई भी इवेंट होता तो पाइन ग्रोव की खबर लगी होती है पहले स्थान पर। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि सिर्फ कहने से नहीं, ये व्यवहारिक रूप से करके दिखाया गया है। व्यवहारिक रूप से इस सारी चीज को जमीन पर जो है प्रैक्टिकल तरीके से उसको बच्चों के बीच में ला करके जो उसको तैयार किया गया। और निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को लेकर के हमें प्रसन्नता है। मुझे इस बात को भी देख करके मैं देख रहा था कि 1991 में आपने शुरू किया था, उस वक्त आपके पास 6 रूम थे और आप कह रहे थे कि 18 बच्चों से शुरुआत की थी। और एक बहुत ऐसा एक दौर था वो जब बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे, कई बार आपके मन में भी प्रश्न खड़े होते थे कि जो मैं कर रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा। लोग तो करते ही थे होंगे शायद, मैं कल में बहुत सारे प्रश्न खड़े करते थे कि भाई स्कूल चल तो रहा है, खोल तो दिया है, चलेगा कि नहीं चलेगा। और हमेशा जब कोई आदमी बहुत छोटी चीज़ से शुरू करता है तो उसको ज़िंदगी में ऐसे पड़ाव में से गुजरना पड़ता है कि होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे प्रश्न बहुत सारे खड़े किए जाते हैं। और मैं आपको कहूँ बहुत सारी चीज़ें मेरी और आपकी मिलती हैं। जब हम भी राजनीति में आए थे, इस क्षेत्र में आए थे, तो तब हमको भी यही बहुत सारा ऐसा लगता था कि चलेगा कि नहीं चलेगा। घर में भी ये सुनने को मिलता था, रिश्तेदारों से भी। जब पहला चुनाव लड़ा था, हम चुनाव हार गए थे और मुझे चुनाव लड़ने से पहले कह दिया था कि जहाँ से चुनाव लड़ते हो वहाँ जमानत जब्त होती है, तुम्हारी भी जब्त हो जाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले समय में वहाँ पर थोड़ा खड़ा हो काम अपना, तो इसलिए मुझे वहाँ पर भेजा गया। और मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो चुनाव जमानत बची, मुकाबला हुआ, अच्छा मुकाबला, लेकिन चुनाव हार गया। थोड़ा सा लगा मुझे कि हाँ, कुछ लगा कि भी हम आगे मेहनत की। देखिए, उसका मेहनत का दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और आज मुझे उस बात की खुशी है कि परिश्रम किया, रात दिन मेहनत की, और उसका परिणाम है कि आज उसी विधानसभा क्षेत्र जहां जमानत जब्त होती थी मेरी पार्टी की, आज वहीं से मैं 5वीं बार विधायक हूं लगातार, और आज हिमाचल प्रदेश में इस मुकाम पर पहुंचा। तो यही कहा जाता था। तो ऐसे दौर में से मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी सीखने के लिए, जो कैप्टन साहब ने यहाँ पर जो बात कही, इनके जीवन से बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए बहुत बातें आपके पास।
इसलिए मेहनत करो, मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। और जीवन में वक्त अच्छा बुरा वो सारा चलता रहता है, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए। अगर लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं तो जिद और जुनून के साथ उसको हासिल कर सकते हैं। और किसी कठिन लक्ष्य को हासिल करने के लिए देखिए, बहुत मैं इस बात को मानूं कि सहजता से सरलता से चीजें किसी के भाग्य में हों तो बात अलग होती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति होती है तो उसके लिए एक जुनून होना बहुत आवश्यक है। और जुनून के साथ आगे बढ़े, मेहनत के साथ आगे बढ़े तो लक्ष्य कितना भी कठिन हो, मुश्किल हो, उसको हासिल किया जा सकता है। और मैं कई बार देखता हूं कई ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद वो जिद थी, जुनून था। एक आपने सुना होगा कि एक अरुणिमा करके जो है, एक पर्वतारोही के नाते भी उनको जाना जाता है। स्पोर्ट्स की, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा काम करती थी, काम उनके जुनून था बहुत काम करने का। अरुणिमा सिन्हा शायद नाम है उनका, जो उत्तर प्रदेश से। कभी आपको मिले उनके जीवन के बारे में। ट्रेन में जा रही थी, ट्रेन में कुछ लोगों के लड़कों के साथ थोड़ा स्कफल हो गया, उन्हें धक्का दे दिया, ट्रेन से नीचे गिर गई और ट्रेन की पटरी पर पांव आ गया, ट्रेन पांव के ऊपर से निकल गई, एक पांव उसका कट गया और ऐसी परिस्थिति में बेहोश हो गई। और जगह भी फ्रैक्चर थे और जगह भी चोटें लगी थी। लेकिन जब होश आया तो उसने देखा कि मेरा शरीर से, मेरी टांग से मेरा पांव वहाँ अलग पड़ा है और उसमें कीड़े मकोड़े जो पटरी पर होते हैं वो उसको कुतरना शुरू कर दिए। थोड़ा अपनी आंखों से देख पाए, वो उठने की कोशिश की, उठ नहीं पाई। और इस बीच में कई ट्रेनें वहाँ से उसी रूट से होकर के निकल गई। आखिरकार कुछ लोगों ने जब बाद में देखा काफ़ी देर से, तो उन्होंने उसको उठाया, हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर उसको दिल्ली ले गए। हॉस्पिटल में बेहतर ट्रीटमेंट के लिए सारा और सारे ऑपरेशन हुए, सारी चीज़ों को लेकर के। फ्रैक्चर दूसरी टांग भी थी, लेकिन फिर उसके बाद उसको जीवन में लगा कि वैसे तो मुझे ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई तो मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूं। शायद भगवान ने मुझे जिंदा इसलिए रखा कि कुछ करने की अभी भी गुंजाइश है। तो ऐसे में उसके मन में पहले से एक भाव था कि मुझे एवरेस्ट क्लाइंब करना है और उस लक्ष्य को लेकर के वो अपनी तैयारी भी कर रही थी। लेकिन मन में उसको बहुत दुख हो रहा था कि अब ये कैसे होगा, ये संभव नहीं है। और उसने अपने परिवार के लोगों के साथ जब बातचीत की कि मैं ठीक हो करके मैं एवरेस्ट क्लाइंब करना चाहती हूँ और मुझे आप जो भी मदद इसमें कर सकते हैं वो करिए, तो परिवार के लोगों ने थोड़ा हौसला दे करके यही कहा कि ठीक हो जाओ। उसके बाद सारी चीज़ों को सोचते, हॉस्पिटल में इस प्रकार से जब पाँव कट गया है, एवरेस्ट पे चढ़ने की बातें कर रही है, तो उनको लगा कि शायद थोड़ा मानसिक रूप से उनको बहुत बड़ा आघात लगा, तो इस कारण से ये इस तरह की बातें कर रही। लेकिन उसने जिद की और हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद उसने कहा कि मुझे बछिंद्री पाल से मिलना। बछिंद्री पाल से मिलने के लिए परिवार वालों ने कहा कि ठीक है, अब बात कह रही है, जिद कर रही है तो ले जाना चाहिए। गई, उनको मिली और उनके सामने उनने इसी बात को कहा कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब करना। उनने उनके हौसले को दाद दी कि जो भी मैं मदद कर सकती हूँ वो करूँगी, और उनने मदद भी की। और धीरे धीरे वो थोड़ा स्वस्थ हो गई। स्वस्थ होने के बाद उसने तैयारी की, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन उसने जिद की और जिद करने के बाद आखिरकार शुरुआत की। माउंट एवरेस्ट एक पाँव था, एक पाँव नकली था, लेकिन उसके बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट पर फतेह की, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके आई और दुनिया की पहली वो महिला बनी, वो जो जिसका एक पाँव नहीं था, लेकिन वो उस अपने लक्ष्य को, जो जिस पर जिद और जुनून के साथ उसने काम किया, उस लक्ष्य को हासिल किया। और उसके बाद बहुत सारे उसने एवरेस्ट क्लाइंब किए।
लेकिन उनके जीवन से ये सीखने के लिए है। मैं इसका इसलिए इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, कई बार जीवन में ऐसा दौर आ जाता है जब बहुत बड़ी निराशा भी हो जाती है, लेकिन उस निराशा के दौर से बाहर निकलने के लिए हौसला और हिम्मत, जोश और जुनून वही एकमात्र एक माध्यम होता है। तो उस दृष्टि से मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँ कि अगर लक्ष्य आप निर्धारित कर लें तो उस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, परिस्थिति चाहे जो मर्जी हो, किसी भी प्रकार की हो। तो इसीलिए सभी बच्चों से मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके चलें। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपका ये सौभाग्य है कि आप सबको ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का अवसर प्राप्त, ये सभी को प्राप्त नहीं हो सकता है और सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझें। तो यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स के साथ साथ में खासतौर से कैप्टन सिंह यहाँ आपके बीच पे हैं और साथ में मैडम जी हैं, समीक्षा जी, जो बहुत प्रेरणा देते हैं बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो निश्चित रूप से आप सबका भविष्य उज्जवल होगा, ऐसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर से जहाँ हम इस स्पोर्ट्स सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी देन हिमाचल प्रदेश के लिए आपने दी है। उसके लिए कैप्टन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, समीक्षा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हिमाचल क्या, हिमाचल के बाहर दूसरे देश भर से हमारे ऐसे इंस्टीट्यूशन जो अपने आप को बहुत आगे मानते हैं, बेहतर मानते हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से वो भी यहाँ आकर के इस इंस्टीट्यूशन को देखने के लिए आएंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यहाँ पर तैयार किया है, जो खड़ा किया है, तो उसके लिए वो देखने के लिए आएंगे और यहाँ से कुछ सीख करके जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बार फिर से कैप्टन साहब को और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई और बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में आपको पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये ऐसे माहौल में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है जहां से आप दुनिया के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। I now request our Executive Director, Captain AJ Singh, to present a token of our love and regard to our guest of honor, Dr. Rajiv Saizal, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Ayurveda, Government of Himachal Pradesh. I now request our Executive Director, Captain AJ Singh, to present a token of our love and regard to the Chief Guest, Shri Jai Ram Thakur, the Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh. On behalf of our management, staff and students, it gives me great honor to thank our chief guest, Mr. Jai Ram Thakur, Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Guest of Honor Dr. Rajiv Saizal, Honorable Minister for Health, Family Welfare and Ayurveda, Government of Himachal Pradesh, and other dignitaries for taking out time from their busy schedules to grace the occasion. We would also like to thank the Government of HP, all civil, police and defence officers for all their kind cooperation in assisting the school in its smooth functioning. All guests are requested to join.
May I have your attention, please? All the old Grovians are requested to come back to the stage for a group photograph. Repeat. I repeat, all the old Grovians are requested to come. May I have your attention, please? All the old Grovians are requested to come to the stage for the group photograph. I repeat, all the old Grovians are requested to come to the stage for the group photograph. All the old Grovians are requested to come to the stage for the group photograph. ये जब साइड में मेरा फोन दे दो मिस्टर हेमंत जिंदल टू कलेक्ट हिज गिफ्ट एंड सर्टिफिकेट
I request Mr. Jindal to collect his gift and certificate. I request Mr. Hemant Jindal to please collect his certificate and the gift. I repeat, I request Mr. Hemant Jindal to please collect his certificate and the gift.